in this video, we'll see how one can choose the right optional for UPSC, since it is one of the most important and confusing task for any aspirant, if you ask. Like बहुत लोग फ्रेंड्स के उस पे ले लेते हैं या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो होता है वो ले लेते हैं. So I will clear all your doubts since I'm having experience of 4 years. So let's begin. See, optional इतना ज़रूरी क्यों है? Because now these days essay and optional, it is actually making a hell lot of difference in the marks. So it is important. So let's discuss certain myths and propagandas, that is that optional should be taken by everyone. That is optional having a small syllabus like sociology, anthropology. Optional which is in trend, it should be opted. जैसे कि लाइक हाल ही में हमें पता है लाइक सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एकदम से ट्रेंड बढ़ गया था उसका, तो बहुत लोगों ने इसी वजह से इसको ऑप्ट किया था. या फिर ऑप्शनल विच हैज़ गॉट द मैक्सिमम सिलेक्शन लास्ट ईयर, कि जो भी टॉपर्स है टॉप 50 में जो आ रहे हैं, टॉप 100 में जो आ रहे हैं, तो उनका जो ऑप्शनल है तो वो ऑप्ट कर लिया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. टॉपर्स विच आर स्कोरिंग द हाइएस्ट मार्क्स. So this should not be the like your criteria for the selection of any optional, whether you have to choose whether it is sociology, mathematics, physics, etc. Now coming to the next question is like these are the things that you should ask yourself before picking up the optional. That is, if you are very confused between certain like optional list, if you're a beginner, you cannot like you haven't joined the coaching, कोई family background नहीं है, so what all questions you must ask yourself? See, like first is like, am I finding this subject interesting or not? Like, is this subject suitable to your interest or not? Like, can I study this subject for 2 to 3 years? Because see, frankly speaking, you never know when you will be able to crack this attempt. Okay, so it is a journey of like on an average 2 to 3 years. Some might take 4 years, 5 years, but on an average I'm talking right now. Okay, so the third question is like, are there enough good resources available in the market? Is the coaching available or not? Are the online offline sources enough? And if not, so what can you do? Then can it be prepared at home? Because see, everyone cannot migrate to Delhi, Karol Bagh, and उधर लाइक सेटल नहीं हो सकते हर कोई. सो ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए कि जो आप घर बैठे पढ़ सको, मटेरियल आपको मिल जाए ऑनलाइन ऑफलाइन और आराम से प्रिपेयर हो जाए. एंड हाउ इट कैन लाइक इंटीग्रेट इन योर जीएस प्रिपरेशन. बिकॉज सी, सर्टन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस. सी, माई ग्रेजुएशन इज इन मैथमेटिक्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट माई ऑप्शनल इज सोशोलॉजी. It is actually a switch from science background to arts field, and since I'm like I don't have any arts background, but still I opted for sociology because I'm able to integrate, I'm able to like correlate certain things in society in my GS preparation, GS paper 1, 2, 3. So एक पूरा holistic approach मेरा prepare हो रहा है. अब हर रोज़ मैं हिंदू पढ़ रही हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही हूँ, so I'm able to relate things. I'm not promoting that you should like opt for sociology, but it is certain example. See, moving to my next slide is like how to approach. See, first of all, you should check the syllabus. Ekdam go through it. If you're comfortable, switch on, otherwise reject it. Okay, you can analyze the previous year question, like 10 years के papers उठा लो, उसके बाद आप answers लिखो. Answers आप like अच्छे तो obviously पहली बार में नहीं लिखता कोई भी, और but analyze करो कि आप कैसे लिख रहे हो उसको. सी, थर्ड पॉइंट इज ग्रेजुएशन. सिंस आई टोल्ड यू दैट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तभी आप लो इफ़ यू आर इन लव विद दैट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. इवन इफ नो वन इज ऑप्टिंग, सो यू माइट हैव लेस कॉम्पिटिशन. सो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है. सो इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ टोटली अप टू यू. And try to choose an integrated subject, like try avoiding physics, mathematics वगैरह. But if you love that subject like physics, mathematics, so go for it. चाहे कितना भी मुश्किल हो या कितना भी like competitors हो या ना. See, try reading basically 1 or 2 books of the selected optionals like NCRTs or the basic standard books, if you like at least for a month. And in case you don't enjoy it, कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, so kindly reject that subject. So this was the holistic approach of choosing the optional, and that's it for today. And kindly subscribe